और ब्लू स्टार से आज हम बातचीत करेंगे, जो देश की लीडिंग एयर कंडीशनिंग कमर्शियल रजिस्ट्रेशन की लीडिंग कंपनियों में से एक है और कंपनी को इस सेक्टर में 80 साल से ज़्यादा का अनुभव है। कंपनी के पोर्टफोलियो में कूलिंग सॉल्यूशंस की बड़ी रेंज है। मैनेजमेंट से हम ग्रोथ आउटलुक और समर डिमांड के ट्रेंड समेत सरकार के उस फैसले पर भी बात करेंगे जिसमें सरकार ने क्रिटिकल एसी और रेफ्रिजरेशन कॉम्पोनेंट्स को BIS सर्टिफिकेशन से छूट दी है। और अब चर्चा के लिए हमारे साथ ब्लू स्टार के MD बी त्यागराजन जुड़ गए हैं। त्यागराजन सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और सर, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पहले उसी से ही शुरुआत करते हैं सवालों की। DPIT ने यहाँ पर BIS सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट को जो है हटा दिया है। अब ये बताइएगा कि इसका इम्पैक्ट ACs की बात करें और रेफ्रिजरेटर्स की बात करें, इस पूरी इंडस्ट्री पर करें तो आप कितना ज़्यादा इम्पैक्ट देखते हैं, खासतौर से इस वजह से भी क्योंकि इम्पोर्ट्स चाइना से होते हैं। Afternoon, Kavita. It's a pleasure interacting with you. See, the restrictions in the form of licensing through BIS certification had been there. In a manner of speaking, you can call it as a non-tariff barrier. It was introduced, for many items since 2020 for ensuring that only products that conform to Bureau of Indian Standards can be imported. Second is that domestic manufacturing ecosystem has to also develop under the Make in India program. At some point of a time, India should become self-reliant. That has been the overall program. Now, take for example an item like inner grooved copper tubes. These copper tubes are critical for the efficiency of the air conditioners, reliability of air conditioners, or for that matter, any cooling product. Now, it has to conform to a particular quality standards, and therefore the restrictions have been put in place. Simultaneously, there are players like Hindalco, Adani, Medtube. They have invested money. Some of them are part of the PLI scheme also, and they are building the capacity. They are scaling at this point of time. So one looks at whether India should import and what quality standards those imports should conform to. What is the domestic capacity that is available? How the market is growing so that you are able to keep the supply chain going. And industry has been anxious on this supply chain disruption issues for many components. It's not only copper tube; it is also connected with the compressors, for example. Now, we are in a transition stage. India has achieved what it is supposed to achieve for the finished goods as a whole. Now, air conditioner PLI scheme is a very successful scheme. The production capacity have more than doubled. The value addition that is taking place is close to 70% from not even 10% value addition was happening before the PLI scheme. Now, it is the last mile. Which are those components and raw materials which we have to achieve? So, copper, this is a welcome move that it is lifted, and in about 18 months to 24 months, I think the domestic capacity will be available. And as I say, right now the compressor is the issue the industry is talking about, and these are constructive dialogues with the government. चलिए, तो आगे की रफ्तार काफी स्मूथ यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, एक और खबर सर जो कि सोर्सेस के हवाले से हमें मिल रही है प्राइस हाइक को लेकर, क्योंकि यहाँ पर डॉलर में मजबूती, क्रिटिकल पार्ट्स जैसे कि आपने बताया कंप्रेसर्स हो गए, ये अभी भी इंपोर्ट होते हैं। प्राइस हाइक को लेकर फिलहाल आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि कीमतें रॉ मटेरियल्स की बढ़ी हुई हैं, कितना प्राइस हाइक किया जाएगा और किस हद तक किया जाएगा?
The policy of Blue Star is very clear that if there is a raw material or input cost hike, it will be passed on to the consumers. Right now, there are some input material cost hike and also connected with the exchange rate. And we had increased the prices only in February, and we may have to look at it in April. See, right now, there is also huge turmoil in the global supply chains, and you cannot in a business like this keep revising the prices every week. So what we took stock of the situation in February, we did it. We will again review in April. If the input costs come down or exchange rate come down, that will again be passed on to the consumers. Right now, it is very, very volatile. One will have to monitor. But the pricing is not going to be based on the demand. जी आपने बिल्कुल कहा कि इसको इतनी जल्दी जल्दी प्राइस हाइक आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप रिव्यू करते हैं, अप्रैल में आप रिव्यू करेंगे, प्राइस हाइक जो होगा, जो पास ऑन किया जाएगा कंज्यूमर्स को, वो किस बैंड में होगा, कितने से कितना तक ये पास ऑन किया जा सकता है? इफ यू कैन जस्ट गिव मी समथिंग इन परसेंटेज. If I look at the trend of raw material hike and the exchange rate, I think somewhere around 3% hike may have to be done. But again, there is some miscommunication here, which I wanted to clarify. It is not summer demand is high, there is shortage of material. One will go ahead and increase the prices. At least Blue Star policy is not meant on that basis. There is more demand, so I go ahead and increase the price. If there is a genuine input cost increase, we will go ahead and pass it on. Reduction, we will again pass it on. Okay. So आपने समर सेल्स का जिक्र किया सर. सो कंपेयर टू लास्ट समर, इस समर में आपको सेल्स को लेकर क्या उम्मीदें हैं अक्रॉस कैटेगरीज, अगर आप हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस बता सकें तो. My judgment is it should be anywhere between 25 to 30% this summer. It was on a very large base last year. It was a 57% growth last year. On that base, 25 to 30% is possible. But then you have to wait and see how the weather plays out. Some 1 week of rain can spoil this. त्यागराजन जी, जब भी आपसे बात होती है तमाम सवालों के जवाब आप देते हैं काफी विस्तार से. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच, आप जुड़े हमारे साथ आज. थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू. चलिए एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के उस पार मानस हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हालांकि